Okay, so I think in the last lecture we have discussed about force method of analysis. In force method of analysis, I have told you we will calculate deflection and rotation from different methods, and we will generate a compatibility equation to find out the redundants. Okay. In this particular lecture, I am moving to one of the important methods of displacement. Okay, one of the displacement method of analysis. It's called moment distribution method. Okay, moment distribution method. The objective of this method is to find out end moments. Okay, the objective of that method will be to find out end moments. Okay, with the help of these end moments, you can get all the remaining redundants. For example, if you have any beam, okay, suppose you have some indeterminate beam here, okay, something like this. In this particular case, if you apply moment distribution method, you will be able to obtain these moments. This moment is obviously 0. Okay, you will get this moment here, say it is m1. Okay, then you have this second beam here, you will get this m2. Okay, this as m3 and this as m4. Okay, and this is m5. So these end moments you will be able to obtain with the help of moment distribution method. Later what you have to do, you have to use these moments. Okay, you have to use these moments to get these reactions. Okay, so with the help of these moments you can actually evaluate all the redundants. Okay, some points about this moment distribution method. First point is it is actually a displacement method of analysis. Displacement method of analysis. Now here many people get a confusion. Okay, many people get confused here because of a simple reason. We are trying to find out moment, isn't it? So our unknown is actually a force, but this is a displacement method of analysis because it is nothing but it is a indirect way to solve slope deflection equation. Moment distribution is nothing but an indirect way to solve slope deflection equation. Okay, these are some of the points and basic outline what we are trying to do in moment distribution method. Moving on, how we are going to solve this moment distribution method. First of all, I want to introduce one factor. It's called distribution factor. Distribution factor. Okay, distribution factor means that suppose you have a joint here, okay, and you have some members coming here and one member coming here. Suppose this joint is B, this is your A, C and D. Okay, stiffness of this point is KBAC, I am saying this is KBC and this is KBD. Okay, if I want to write the distribution factor for say BC, okay, so distribution factor of this BC is given by KBC divided by whatever members are getting connected with B. So it is AB, BC and BD. So it will be KBC plus KBA plus KBD. Okay, this is how you will calculate distribution factor of BC. Similarly, if I want to write distribution factor of AB, okay, I will write it as KBA divided by KBA plus KBC plus KBD. And in a very similar fashion, you can write distribution factor for BD also. It will be KBD, okay, divided by KBD plus KBC plus KAB. Is it okay? This is how you are going to evaluate the distribution factor. Okay, in a simple language, if you want to remember, distribution factor is nothing but stiffness of member, whichever member you are trying to find a distribution factor for. Okay, say I am calling it distribution factor of member M and you are finding distribution factor for M, divided by total stiffness
okay, of member at that joint, okay, at that joint. Suppose the common joint was B, right? So all the members that are connecting with B, this AB, BC and CA, will contribute your total stiffness. Okay, I hope you are able to understand this. This is how you are going to calculate the distribution factor. Now the another question that arises is, how will I calculate this K or this stiffness? Okay, the normal method to calculate stiffness is something like this. Okay, suppose this is a fixed beam, okay. This is your fixed beam and here you have a pin joint, okay. Now, or rather this is also your fixed joint, okay. Stiffness means that m upon theta. That means what moment should I apply here, m, to create angle theta here, okay, theta here. This m upon theta is your stiffness. This is very similar to P by delta, okay, P by delta. If it was force type, you will write it as P upon delta. In a similar fashion, you will write it as m upon theta, okay, in this case. So your stiffness means that what moment m should I apply to create an angle theta here, okay, create an angle theta here. Suppose in this particular case only, if I want to generate theta angle here, the moment that I should apply is 4 ei theta upon L, okay, 4 ei theta upon L. So you can tell me what is the value of stiffness for this beam. Stiffness for this beam is equal to 4 ei theta upon L, or rather I am writing it more general. It is equal to m by theta. Is it okay? M is equal to how much? This value, 4 ei theta upon L. 4 ei theta upon L divided by theta. You can cancel out theta from here and here. You will get 4 ei upon L. 4 ei upon L. So your stiffness value for this type of beam, this type of beam means what? This type of beam means either you have both ends fixed, okay, or you have both ends continuous, okay. For that type of beam also, this type of 4 ei by L can be applied, okay. Suppose you have end beam, or you are on the end span. This is your, say, fix, and this is suppose a pin joint. Can you tell me the stiffness of this beam? Okay, can you tell me the stiffness of this beam? Stiffness is nothing, I have already told you, it is m upon theta. So what moment m should I apply here to get, okay, to get theta here, okay. So I think this we have already done in the very first lecture where we were discussing standard method. This value is nothing but 3 ei theta upon L, okay, 3 ei theta upon L. Okay, so what is the stiffness value here? Stiffness is nothing but m by theta. M is equal to 3 ei theta upon L divided by theta. So I think it is 3 ei by L, okay. So for, let me write it here, your K is coming out to be 3 ei by L, okay, and this is valid for what? End span. End span means, okay, either you have a fixed support here and at the end you have pin joint here, or you are having a continuous pin joint here and one pin joint at the end. For this type of span, your stiffness is equal to how much? It is equal to 3 ei by L, okay. There are some other cases. For example, if you are making use of symmetry, okay, if you are making use of symmetry, okay, you will have stiffness equal to 2 ei by L, okay. Sometimes what will happen, suppose you have some frame like this, okay, I am just giving you a hint for now. We will solve a question and then you will be able to understand. Suppose you have a frame like this, you have fixed joint here, and some symmetric loading here, okay. So you can clearly see that this frame is, rather, this frame is symmetric, isn't it? You can see that this will act like just like a mirror, okay. So for symmetric, what we used to do, we will cut it here, okay, and we will only solve half of this frame.
So the stiffness of this member, the common member, is equal to 2EI by L. So whenever you are making use of symmetry where stiffness is equal to 2EI by L, this will shorten your question to no extent. Okay, it will shorten your question like very much. And your K is equal to 6EI by L if you are making use of anti-symmetry. Anti-symmetry means this. Suppose you have something like this, here, here and here. Okay, you have fixed support here, you have fixed support here, this is straight, okay, and you have some loading here. This type of structure is called anti-symmetric. Okay, in this case also what you can do, you can only solve half of this structure. Okay, only this much structure you can solve. If you are doing that, you should use the stiffness of this member as 6EI by. Okay, so I am summing up the value of K and distribution factor. Okay, first I told you that distribution factor is equal to stiffness of member M, say, divided by total stiffness at that joint. Okay, then we talked about stiffness. Stiffness, I told you, it is 4EI by L. Okay, it is 4EI by L for intermediate span. Okay, intermediate span or fixed support. Okay, fixed support, that is these things. Either you have this type of span, intermediate span, okay, or you have this type of span. Okay, then also you have your stiffness as 4EI by L. Okay, then we discussed that K can be equal to 3EI by L also, that is in the case of what? End span. Okay, end span, that is something like this. If you have, okay, maybe one end is continuous and the other end is, this is the last span and the last span is pin joint. Okay, also you can have fixed support here and this is your pin joint. So for this end spans, okay, you can use your stiffness as 3EI by L. Okay, then I told you that stiffness can also be equal to 2EI by L. Okay, if you are making use of symmetry, okay, to reduce the length of your question, and K can also be equal to 6EI by L if you are making use of anti-symmetry. Okay, anti-symmetry. I hope you are able to understand this. The next part that we want to focus on is fixed end moments. Okay, to solve this method we are going to know, okay, we should know what is the value of fixed end moments. Okay, now I will show you some standard case and you should remember these values. Okay, they're very simple. Let's start with something like this. Okay, suppose your first part is both ends are fixed. Okay, obviously both ends will be fixed because you are asking for fixed end moment, and then you have UDL, okay, of W. Maybe first case can be this, then your next case can be, okay, your both ends are fixed and a center load P is acting. Okay, another case can be your both ends are fixed and P is acting but at in an unsymmetric way. Okay, A and B. Suppose that your support is getting settled. Okay, support is getting settled like this by an amount, say delta. Okay, then what is the fixed end moment? Okay, suppose your end is getting slip. Okay, rotational slip is happening at your end, so it is becoming something like this. Then what is your theta? Then what is your end moments? Okay, apart from this, I think one more you can remember. Okay, there are many more, but I think this moment one is very important. Okay, concentrated moment. This is your fix, this is your fix, and some concentrated moment M0 is acting here. This is your distance A and this is your distance B. Then what is the fixed end moment? Okay, if you want you can remember one more. It is something like this. This end is fixed, this end is fixed, and you have triangular loading here. Okay, you have triangular loading here,
something like this. Okay, now let us start with the values. Okay, here you will get fixed end moment. I am also telling you the sign convention that we follow here is anti-clockwise movement will be taken as negative and your clockwise movement is taken as positive. It is slightly different, okay, from what we do usually. We usually use anti-clockwise as positive. Here we have anti-clockwise as negative and clockwise as positive. So this value here, this value on the left, this is your anti-clockwise, so it is minus WL, L is the length, WL square upon 12. Okay, and this value is clockwise, so it is plus WL square upon 12. This value here is again minus PL upon 8. Okay, this value here is plus PL upon 8. Remember it with sign always. Okay, this value here is equal to PAB square upon L. See, this is your P, the closer distance is A, so PAB square upon L square, L square. Okay, and here this is obviously negative, plus PBA square upon L square. Okay, this value here is nothing but 6 EI, obviously it is minus 6 EI delta upon L square, and this value is also negative. Okay, this is also minus 6 EI delta upon L square. Okay, this is very common one, you must be knowing this. This value here, this value, okay, this value here is plus 4 EI theta upon L. Just now we saw it, this value, okay, when we were calculating stiffness. This is 4 EI theta by L, and on the other end this one is minus 2 EI theta upon L. Okay, direction is wrong here, correct the direction here. Your direction should be like this, because this part is trying to get up, so it moment will push it downwards. This is also positive. Okay, here what you will have for this moment value, you will have m naught, this value is m naught b by L square. This value here is m naught b upon L square into 3a minus L. It is slightly difficult to remember this. Okay, and this value is again, it is clockwise, so it is positive, m naught a upon L square, okay, 3b minus L. Okay, try to remember it. If you revise it a couple of times, I think you will be able to remember it. This value here is W naught, okay, W naught L square upon 20. Okay, and this value here is W naught L square upon 30. This is positive and this is negative. Okay, the 20 and 30 you can remember. So these are some of the fixed end moments that we will need in this method, and you should absolutely remember. Okay, absolutely, this first one and second one are the most important. PL upon 8, okay, these will be most commonly used, and WL square upon 12. This can also be used PAB square upon L square, PBA square upon L square. This will be used whenever you will be having your support sinking problem. Okay, if your support sinks by an amount delta, it will produce fixed end moment of 6 EI delta upon L square and minus 6 EI delta upon L square. Here, if you have rotational slip in your support, okay, then we will use this type of fixed end moment, 4 EI theta upon L, and this is 2 EI theta upon L. If you have concentrated moment in your span, your fixed end moment is given by m naught b upon L square into 3a minus L, m naught a upon L square, 3b minus L. And this value you can remember it like 20 and 30. Okay, 20 and 30. So I think these are all the fixed end moment that you should know. With these many moments, I think you will be able to solve any question. Okay, last thing that I want to talk to you about before we start our method is your carryover factor. This is the third and the last thing that I want to talk about, carryover factor. Carryover factor simply means that suppose you have a fixed support here and you have a pin joint here.
Okay, suppose I apply a moment m here. Okay, so this your beam will try to deflect like this, isn't it? Because of this moment m here, as a result of this you will have some moment here also. Okay, okay, so this moment here is say m naught. Okay, so the carryover factor means what proportion of this m, okay, is transferred in the form of moment at your fixed end. So this m naught is given by m by 2. Okay, so your carryover factor is equal to 1 by 2. Okay, similarly, if this would have been a continuous support also, then also your carryover factor would have been 1 by 2. Okay, carryover factor would have been 1 by 2. But let me tell you about this case. Suppose you have a beam like this. Okay, or rather you have fixed support here and you have pin joint here. Suppose I apply a moment m here. Okay, then what is the carryover factor to this joint? Carryover factor here is 0. Okay, think about it. Your pin joint cannot have any moment, isn't it? So the carryover factor is 0 when you are moving from your fixed to your pin joint. But if you apply some moment on your pin joint, you will definitely have some carryover from here to here as 1 by 2. Okay, so this you have to remember, carryover factor is 1 by 2 from this side to this side, but from the fixed to pin joint you have no carryover because your pin joint cannot have any moment. So here moment is obviously 0, so your carryover factor is also 0. Okay, so I hope you are able to understand. Now let's start with our method. Okay, let's start with our method. Working approach. In working approach, what you have to do, suppose you are given with some beam. Okay, step by step you have to follow everything. Okay, suppose some beam is given like this and you have certain loading here, say P, and you have some UDL here. Okay, I am writing all the steps and you should follow the steps as it is. Okay, this is your joint A, say this is joint B, and this is joint C. Okay, step 1, or rather I am writing here. Okay, first step is to, okay, write the name of joints. Okay, A, B, C. Okay, now draw a small table like this. Okay, second step, okay, step 2 is write the name of your member. Member means this member here will be called AB. Okay, and this member from B side will be called BA. Okay, similarly this member from B side is called BC, and this member from here is called CB. Okay, this is how you have to work. Okay, write the name of your members in the second step. Third step, step 3. Okay, step 3 is your distribution factor. Distribution factor, you can find it out in some rough area. Okay, here suppose I am trying to find distribution factor for this AB. Okay, distribution factor for AB, what is the formula? The stiffness of AB, okay, divided by stiffness of all the points joining node A. So there is only one member connecting A, that is your AB only, so I will write KAB. So I think your distribution factor here is 1. Okay, distribution factor of AB is 1. I hope you are able to understand. See, distribution factor का formula क्या है? Stiffness of AB divided by total stiffness, जितने भी member तुम्हारे इस joint A से निकल रहे हैं, एक ही member निकल रहा है AB अकेला, तो इसका distribution factor 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर फिर तुम 1 लिख दो. अब मान लो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ BA निकालना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगा? स्टिफनेस ऑफ BA, ठीक है, डिवाइडेड बाय B जॉइंट से कितने मेंबर निकल रहे हैं? एक तो BA भी निकल रहा है और एक BC भी निकल रहा है. टोटल स्टिफनेस तुम्हें लिखना पड़ेगा KBA प्लस KBC. ठीक है, अब KBA कितना हो जाएगा? 4EI/L हो जाएगा. LAB कर लो, डिवाइडेड बाय
ठीक है, डिवाइडेड बाय 4EI अपॉन LAB, ये भी KB है, और KBC को क्या बोलोगे, KBC जो है तुम्हारा वो एंड स्पैन है, तो एंड स्पैन का स्टिफनेस कितना होता है, 3EI/L होता है, ना कि 4EI/L, सो इट इज़ इतना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा BA का। सिमिलरली तुम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हो BC का, और CV का तो 1 ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। स्टेप 4 पे आ जाओ। स्टेप 4 होती है फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखना। फिक्स्ड एंड मोमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं AB का फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख रहा हूँ, तो तुम A पॉइंट को भी फिक्स कर दो, ठीक है, और B पॉइंट को भी फिक्स कर दो, और अब जो लोडिंग लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग तुम मुझे ये वाले फिक्स्ड एंड मोमेंट्स बता दो, रेड वाले, ठीक है। तो ये तो हमें याद है, ये PL/8 आएगा, -PL/8, और ये PL/8 आएगा। तो यहाँ पे लिख दो -PL/8, और यहाँ पे लिख दो PL/8। सिमिलरली मान लो मैं इस वाले स्पैन की बात कर रहा हूँ, BC की, तो BC कैसा दिखता है, BC कुछ ऐसा दिखेगा, राइट में दिखा रहा हूँ कॉर्नर में, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, UDL लगा हुआ है, ठीक है, W का। तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितने आते थे, WL²/12 आता था शायद, ठीक है। ये माइनस का रहेगा, क्लॉकवाइज है, और ये वाला WL² बाय 12, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे तुम लिख दो -WL² बाय 12, और यहाँ पे लिख दो +WL² बाय 12, ठीक है, ईजी है। ये 4 स्टेप हो गई तुम्हारी। फिफ्थ स्टेप जो है, फिफ्थ स्टेप को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं फिफ्थ स्टेप में। यहाँ पे सबसे पहला काम जो तुमको करना है, जो सर्च करना है तुम अपने क्वेश्चन में, तुमको देखना है कि कहीं उसमें ओवरहैंग तो नहीं है, ठीक है, कहीं उसमें हिंज तो नहीं है, कहीं उसमें एंड पिन तो नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट है, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेट मोमेंट भी इसमें ऐड कर लो, कॉन्सेंट्रेट मोमेंट एट सपोर्ट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट सपोर्ट, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं 4 सारों के एग्जांपल दे दूंगा एक एक, ठीक है। अगर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस दिस, फर्स्ट बैलेंस दिस, ठीक है। ये फिफ्थ स्टेप है, इसको बीच में लिख सकते हो कि पहले तुम्हें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब तुमको क्या करना होगा, स्टेप 6 और 7 जो होगी वो रिपीट होगी, ठीक है। स्टेप 6 तुम्हारी होती है बैलेंसिंग स्टेप, और स्टेप 7 जो होती है वो कैरी ओवर स्टेप होती है, ठीक है। और ये स्टेप्स रिपीट होती रहेंगी से एन टाइम्स, जब तक तुम्हारी वैल्यूज़ छोटी नहीं हो जाती बहुत ज़्यादा, जीरो के क्लोज नहीं आ जाती, तब तक तुम इस स्टेप को रिपीट करते रहोगे, बैलेंसिंग कैरी ओवर, इस तरीके से चलते रहोगे। लास्ट स्टेप जो तुम्हारी होती है हमेशा, ओके, इस तरीके से तुम चलते रहोगे, फिर तुम्हारी स्टेप एन आ जाएगी, मान लो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप इज़ ऑलवेज बैलेंसिंग, ये हमेशा ध्यान रखना। लास्ट स्टेप जो भी होगी वो हमेशा बैलेंसिंग स्टेप होगी, बैलेंसिंग पे लाके तुमको छोड़ना है, कैरी ओवर पे तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लास्ट स्टेप इज ऑलवेज बैलेंसिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी बैलेंसिंग, ठीक है। बस तुम अगर इतना कर लोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे समेशन कर देना, इसका जितना भी तुमने लिखा है यहाँ पे समेशन कर देना, ठीक है, यहाँ पे समेशन कर देना। तो ये जो वैल्यूज़ तुम्हारी आई होंगी, ये तुम्हारे एंड मोमेंट्स आ गए होंगे, ठीक है, एंड मोमेंट्स आ गए होंगे। और एक बार तुम्हें अगर तुम्हारे मेंबर के एंड मोमेंट्स मिल गए, ये 2 मेंबर थे तुम्हारे पास, इनके अगर तुम्हें एंड मोमेंट्स मिल गए, ये मोमेंट मिल गया तुमको, ये मोमेंट मिल गया, ये मोमेंट मिल गया, ठीक है, इन एंड मोमेंट्स की हेल्प से तुम बाकी फोर्सेस का मतलब है कि ये रिएक्शंस इनसे निकाल सकते हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करके। तो तुम्हारी जो पूरी बीम होगी उसमें सारे फोर्सेस तुमको पता चल जाएंगे, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलो, ये तो थ्योरी हो गई, अभी शायद समझ में ना आया हो अच्छे से, ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिंपल सा, ठीक है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ है तुमको, ये वाला एंड फिक्स है, यहाँ पर एक पिन जॉइंट है, और ये वाला एंड भी फिक्स है, ठीक है। ये वाला जॉइंट है तुम्हारा A, B और C, ठीक है। इनर्शिया ऑफ AB तुम्हें दिया हुआ है 300 × 10⁶ mm⁴। इनर्शिया ऑफ BC तुम्हें दिया हुआ है
600 इंटू 10 टू द पावर 6 और रादर 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4, 6 ही है, चलो ठीक है। ये तो मैं इनर्शिया दे रखा है, इसका इनर्शिया कुछ आई ए बी दे रखा है, इसका इनर्शिया कुछ आई बी सी दे रखा है, ठीक है, आई बी सी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारी लोडिंग लगी हुई है, इस वाले स्पैन पर यूडीएल लगा हुआ है 240 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इस वाले स्पैन की जो लेंथ है वो है तुम्हारी 15 मीटर्स, ठीक है, और इस वाले स्पैन की जो लेंथ है वो है 20 मीटर्स, ठीक है, समझ गए होगे। अब तुमको क्या करना है, तुमको सॉल्व करना है और सारे एंड मोमेंट्स निकालने हैं और बीएमडी बनाना है, इसका बीएमडी और शियर फोर्स डायग्राम दोनों बनाना है। हमेशा तुम्हें स्ट्रक्चर एनालिसिस में फाइनल जो पूछा जाएगी चीज़ वो होगी फाइंड बीएमडी एंड एसएफडी। तो मैं ज़्यादा बीएमडी एसएफडी नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम तक लाके छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम बना सकते हो खुद। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें बीएमडी और एसएफडी बना के दिखाना है, ठीक है। प्रोसेस वही है, स्टेप्स टू स्टेप फॉलो करना है इसको पूरा, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, सबसे पहली स्टेप है कि तुम जॉइंट्स का नाम लिख दो, जॉइंट्स। यहाँ पर तुम्हारा कहीं जॉइंट ए है, ये जॉइंट बी है और ये वाला जॉइंट सी है, ठीक है। टेबल टाइप की बना लो एक इनके नीचे, इस टाइप की, ठीक है। ठीक है, इस टाइप की टेबल बना लो। पहला स्टेप था कि हमें जॉइंट्स का नाम लिखना होता है, तो हमने लिख दिया ए बी और सी, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें मेंबर का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी ए, यहाँ पे बी सी और यहाँ पर सी बी। ये तुम्हारी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप होती है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना होता है। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ साइड में, ठीक है। मान लो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है ए बी का, तो मैंने अभी निकाला था के बी अपॉन के ए बी हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर तो मैं 1 लिख दे रहा हूँ, जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए पर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए हो जाएगा के बी ए डिवाइडेड बाय बी से जितने भी मेंबर निकल रहे हैं, बी से क्या क्या निकल रहा है, बी ए निकल रहा है और बी सी निकल रहा है, तो के बी ए प्लस के बी सी। के बी ए की वैल्यू कितनी है, दोनों की 4 ई बाय एल है, तो 4 ई। अब यहाँ पे ध्यान रखना ए बी का अलग आई है, ठीक है, एल बी अलग है, ठीक है, 4 ई आई ए बी अपॉन एल ए बी। और बी सी का अगर देखोगे तो वो है, वो भी 4 ई आई है क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है, तो 3 नहीं लिख सकते तुम, 4 ही आएगा यहाँ पे, बी सी डिवाइडेड बाय एल बी सी। मेरे ख्याल से वैल्यू पुट कर दोगे अगर, तुमको मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। आई ए बी और आई बी सी तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। एल ए बी कितना है, एल ए बी ये रहा 15 मीटर्स, ठीक है, और एल बी सी कितना है, वो है 20 मीटर्स। ये चारों वैल्यू उठा के इसे पुट कर देना, तो मेरे ख्याल से डी एफ डी बी ए जो तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4, ठीक है। सिमिलरली तुम डी बी सी निकाल सकते हो, वो आ जाएगा 0.6, ठीक है, और डी एफ सी बी आ जाएगा तुम्हारा 1। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए का आ जाएगा तुम्हारे पास 0.4, ये आ जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गए। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख रहा हूँ। इस स्पैन में कोई लोडिंग है ए बी में नहीं है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तुम्हारे कितने आ जाएंगे, 0 और 0 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोडिंग है बी सी में, हाँ है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसा आ जाएगा तुम्हारा, इस एंड को भी फिक्स कर दो, बी एंड को, और सी को भी फिक्स कर दो, और इस पर तुम डब्ल्यू का यूडीएल लगाए हुए हो, तो तुम्हारे फिक्स्ड एंड मोमेंट कितने आ जाएंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 यहाँ आ जाएगा माइनस का, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 यहाँ आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू है 240, एल की वैल्यू कितनी है 20, और 12 तुम्हें पता है, वैल्यू पुट करोगे, मैंने सॉल्व कर रखा है, तुम करके देख लेना। ये -8000 आ जाएगा और ये वाला +8000 आ जाएगा, ठीक है।
-8000 और +8000 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है उस पर कहा जाता है कि तुम्हें देखना है कि इसमें ओवरहैंग तो नहीं है, ठीक है, हिंज तो नहीं है, एंड हिंज तो नहीं है, यानी एंड सपोर्ट जो है तुम्हारा हिंज तो नहीं, मेरा एंड सपोर्ट फिक्स है तो चलेगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी जो अगली स्टेप आती है उसको बोलते हैं बैलेंसिंग स्टेप।